Hello, dear students. Welcome to the session. So, before I start talking to you about why we are here today, let's me just check. Am I visible and audible? सब ठीक ठाक है? दिखाई दे रही हूँ? सुनाई दे रही हूँ? Give me a quick heads up in the chat box. So, we will start. All right, I believe I'm visible and audible. So let's just begin the session. So today we will talk about, I'll talk to all those of you who are planning to write CULEE, one of the other law entrance tests. And hi, Samana. Good evening. And thanks for confirming. So आज हम बात करेंगे CULEE, that is one of the law entrance tests for Christ University. So जितने बच्चे भी इस पेपर को लिखने की इच्छा रखते हैं, ये सेशन स्पेशली उन बच्चों को डेडिकेटेड है एंड वी विल कैटेगोरिकली टॉक अबाउट द इंग्लिश सेक्शन ऑफ द पेपर. So what you can possibly do to do better or to do well in this section of the test so that you can secure your seat. Now, I guess let's just begin. So first and foremost, किसी भी पेपर को अच्छा करने के लिए क्या बेसिक्स हमें पता होने चाहिए. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेपर का ऑर्गेनाइजेशन. हे गुड इवनिंग. सो वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर. अगर मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता, हाउ विल आई प्रिपेयर. मेरा अगर गोल सेट नहीं है, मेरा टारगेट क्लियर नहीं है, probably I will not be able to walk the right path. So first and foremost, at structural level, so this paper will be held online. There will be 120 questions which you have to deal with in 90 minutes and इसमें English section के 30 questions होते हैं जो आपको out of 5 sections, one of the sections is English and इसमें 30 questions expected होते हैं. Then there will be +1 mark for every right answer and you lose 0.25 if you make a mistake. तो negative marking होती है इसमें. MCQ मोड में होता है ये एंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इफ आई टॉक अबाउट इन वेरी सिंपल टर्म्स, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं होता. आप इसे इजी टू मॉडरेट क्लासिफाई कर सकते हो. नाउ इजी इसलिए बिकॉज द क्वेश्चंस विल बी फेयरली डायरेक्ट. Moderate इसलिए because the questions will be direct, so either you will know the answer or you won't. So you won't be able to sit and decide कि मुझे आता है कि नहीं आता. I mean सोच के नहीं कर पाओगे. इंग्लिश की ब्यूटी यही है कि या तो आता होगा या नहीं आता होगा. Now let's talk about the kind of questions that are expected in the sentence test in the English section. So you can expect at least one reading comprehension passage, not a very difficult, not very long, neither long, not very difficult. You can expect questions, a lot of questions around vocabulary. So you can expect questions around one word substitution, fill ups, synonyms and antonyms, idioms, phrases, and proverbs. And then you can expect questions around grammar and parajumbles. So this will broadly be the structure of the paper. Now, before I take you ahead and tell you कि आप इसको prepare कैसे करो, क्या ध्यान रखो, किस चीज़ को avoid करो, we should know one thing कि क्योंकि ये पेपर online mode में होता है and the papers are not, official papers are not released. So whatever information we have, it's based on the memory-based questions that the students share with us after they come out of the paper. But broadly, the paper comprises the following questions. So there will be some questions around reading comprehension passage, some around grammar, some around vocab, and parajumble-based questions. So broadly, 4 topics will be covered, around which 30 questions will be structured. So structure बहुत दिमाग में clear होना चाहिए है. इस तरह की हमें preparation करनी है. ऑनलाइन मोड का पेपर है तो हमारी ओरिएंटेशन भी ऑनलाइन प्रिपरेशन की होनी चाहिए. तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सो मेक श्योर फोकस मोर ऑन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस ऑनलाइन रादर देन ऑफलाइन. Then what else do we need to know to do well in a paper? Well, we need to have a very clear strategy to do well in any given paper. Let's just understand वो strategy क्या हो सकती है. So first and foremost, I'm sorry, let's just go back. Okay. Now see, I know that I will be majorly tested around my reading skills, my vocabulary skills, my concepts of grammar, and there will be some questions around parajumbles. वो भी reading based ही होते हैं, ठीक है. तो सबसे ज़रूरी क्या है, अब अगर ये पेपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज से 2 से 3 महीने के टाइम पर ये पेपर होगा, तो हमारी तैयारी किस तरफ ज़्यादा होनी चाहिए. हमारी रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. बिकॉज अब आप ये सोचो कि इंग्लिश सेक्शन जो कि
30 questions out of 120 questions. So we are looking at approximately 25% of the paper. मेजर चंक ऑफ द पेपर इंग्लिश सेक्शन अगर है और ये पेपर अगर आप क्लियर करना चाहते हो, एक अच्छा रैंक लाना चाहते हो, तो इंग्लिश सेक्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है. एंड ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पता है क्या है? इट्स नॉट इवन अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज. तो आप जितना उसमें डीप जाओगे, जितना उसे एम्ब्रेस करोगे, उतना इंग्लिश आपको वापस देगा. तो आपका सिर्फ पेपर की तैयारी नहीं होगी, आप जनरली भी बहुत अच्छा करोगे. यू विल स्टार्ट स्पीकिंग वेल, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वेल, यू विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ वेल. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्रिपेयरिंग द इंग्लिश सेक्शन ऑफ एनी एंट्रेंस टेस्ट. नाउ कमिंग बैक टू दिस, तो मेजरली हमारा पेपर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ग्रामर, वोकैब, राइट. तो मैं अगर खूब रीडिंग करूं तो मेरी अपने आप से इंट्यूटिवली मेरी ग्रामर इंप्रूव होती है, मेरी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होती है और मेरी वोकैब तो इंप्रूव होती ही जाती है. बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट अ वर्ड. सो एक लिस्ट नहीं है आपके सामने जिसको आप बैठ के पढ़ रहे हो और आप उसको मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो. आप उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में देख रहे हो, किसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, तो वो नेचुरली आपकी वोकैबुलरी का पार्ट बन जाते हैं. सो अ लॉट ऑफ रीडिंग इज हैज ऑलवेज बीन वेरी बेनिफिशियल. तो जितना ज़्यादा हम रीड करते हैं, एंड आप लोगों में से जितने बच्चों ने क्लैट की प्रिपरेशन करी होगी, आपको ऑलरेडी पता है कि रीडिंग किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए कितना ज़रूरी होता है. सो रीड एज मच एज यू कैन, मे बी फॉर एन आवर और टू एटलीस्ट इन अ गिवन डे. देन बिल्ड योर वोकैबुलरी. नाउ सी, अगर सेंटेंस फिलअप के फॉर्म में हो तो आप सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देख सकते हो, आप ऑप्शंस को इवेलुएट कर सकते हो एंड आप आंसर्स मार्क कर सकते हो. बट इफ आई आस्क यू, आई गिव यू अ वर्ड एंड आई गिव यू फोर ऑप्शंस एज पॉसिबल आंसर चॉइसेस एंड आई आस्क यू either the synonym or the antonym of the word, you probably will be able to mark the answer only if you're sure of at least the word or at least of some of the answer choices. Now mind it, negative marking का concept है, चांस हम ले नहीं सकते. So and the paper will not be very difficult as I stated in the इनिशियल हाफ ऑफ द सेशन. तो जो बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अच्छा कर लेंगे या ग्रामर अच्छा कर लेंगे, कहाँ जाके फंस सकते हैं? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जैसे क्वेश्चंस पर. वोकैबुलरी एक मेजर चैलेंज होती है हमेशा हर किसी के लिए, लेकिन यही डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकती है आपके सिलेक्शन के लिए. बिकॉज जो ईजी होगा वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जहाँ चैलेंज है, जहाँ लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, वो वही बच्चा करेगा जिसने प्रिपरेशन अच्छी करी होगी. सो मेक श्योर आप उस स्लॉट में फॉल करो जिसने प्रिपरेशन अच्छी करी है. So make sure that you focus a lot on vocabulary. So read a lot, build your word bank. Now, when I talk about this paper, so you can expect questions around confusing words, as already stated. You can expect questions around idioms and phrases. So बहुत structured है. We kind of know what to expect. So उन areas पे काम करना will always be a right choice. Now, we know that a majority of the paper will be based on grammar-based questions. Now, these are not very difficult questions, but if your concepts are strong, तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. बट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, तो इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है. सो माइट एज वेल बिल्ड योर ग्रामर, बिकॉज एटलीस्ट क्लैट में शायद आपने ग्रामर पे इतना ध्यान नहीं दिया होगा, बट दिस इज द राइट टाइम. वर्क ऑन योर ग्रामर, वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स. जनरली किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, दे टेस्ट योर नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ग्रामर. Build your basics of vocab, grammar, and build your reading comprehension skills, okay? And then एक अच्छा तरीका किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने का होता है कि आप उसके मॉक लिखो, उसके एनालिसिस करो, ध्यान से देखो क्या गलती करी, एंड उसको डाउट्स को, जो भी आपके डाउट्स बनते हैं, उसे क्लियर कराना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है. सो मेक श्योर दैट यू डू ऑल ऑफ दीज टू डू वेल इन दिस एंट्रेंस टेस्ट. नाउ इसी स्ट्रैटेजी को अगर मैं आपको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करके बताऊं, इसे हम समझे फेज वाइज. अब लेट्स से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पेपर होने वाला है अब से फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ. तो हम अगर थोड़ा थोड़ा टाइम भी मान के चले, लेट्स से कि फेब्रुअरी चल रहा है, फेब्रुअरी में मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, या मार्च मिड तक मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एंड मार्च मिड से पेपर तक मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बिकॉज वी एक्सपेक्ट द पेपर समवेयर अराउंड अप्रैल. सो या मे बी समवेयर अराउंड मे. सो अगर मेरे पास रफली 2.5 या 3 months का टाइम है, तो मैं क्या करूँ ऐसा दैट आई डू वेल इन दिस पेपर. सो फर्स्ट, लाइक आई ऑलरेडी सेड, रीडिंग तो हमें करना ही है. सो मेक श्योर दैट यू डेडिकेटेडली रीड फॉर एटलीस्ट an hour in a given day, and try to read from online sources. So there can be various online sources. So you can read The Hindu, you can read
Aeon, articles from Aeon, or maybe Farnham Street, or Literary Hub, or maybe some other renowned newspapers. Then you can read from various good magazines. You can read literary passages. You can read a lot articles from a lot of sources. So make sure that you keep your reading eclectic. Then we've already established that you need to work on your vocab. So एक dedicated time हमारे दिन का जरूर ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपनी vocab को strong करो. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग होता है, बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन होता है. दिस इज वन एस्पेक्ट जिसे कोई भी शायद कर लेगा, लेकिन वो कैब वो चैलेंज है जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा इंग्लिश सेक्शन में आपका स्कोर ऊपर ले जाने के लिए एंड आपकी सीट सिक्योर करने के लिए, क्योंकि यही वो सेक्शन है जिसमें या तो बच्चों को आंसर आता होगा या नहीं आता होगा. देन ग्रामर अगेन इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स. सो if you read well, even if you don't understand the rules, sometimes you can intuitively mark the right answer. And when I say intuitively, make sure that you evaluate all the options before you trust your intuition and mark the answers. Then reading comprehension की practice करना ज़रूरी है, उतना ही जितना grammar और vocab की practice करना बहुत ज़रूरी है. Then you need to work around parajumbles and you need to write some mocks. Now, when I say you need to do this in phase one, what I mean to say is अपने बेसिक्स पे काम करो. व्हेन आई से ग्रामर, ग्रामर के रूल्स पढ़ो. व्हेन आई से बिल्ड वोकैबुलरी, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने के बजाय लर्न कंफ्यूजिंग वर्ड्स. गिव योरसेल्फ वीकली टारगेट्स कि इस हफ्ते में मुझे कम से कम इतने कंफ्यूजिंग वर्ड्स लर्न करने हैं, या इतने इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न करने हैं, इतने प्रोवर्ब्स लर्न करने हैं, इतना वर्ड बैंक तो मेरा बिल्ड होना ही चाहिए. नाउ व्हेन आई से ग्रामर, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस अराउंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, voice, narration, parallel structure, modifier. These are some common topics. Prepositions, common topics हैं. Phrasal verbs, जिसके around questions हमेशा expected होते हैं. So make sure that you build your concepts in phase one. Now, reading comprehension passages are something जो आपको practice ही करना पड़ेगा, and I would strongly recommend practice online. देन पैराजम्बल्स अगेन होते बहुत आसान है, लेकिन अगर हम इनकी स्ट्रैटेजी पे काम कर ले कि बिकॉज ये विद ऑप्शंस होते हैं, तो उसको लेके कैसे जाना है. आई मीन इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड सॉल्विंग द पैराजम्बल, देयर आर सम वेरी गुड स्ट्रैटेजीज जिसकी वजह से ये ज्यादा आसानी से हो सकते हैं. सो मेक श्योर इन फेज वन यू वर्क ऑन बिल्डिंग द स्ट्रैटेजीज. आप अपने बेसिक्स पे काम करो. And then when I say phase two, you'll see that I've written more or less the same thing. There is hardly any difference in phase one and phase two. But what will differ, what should differ in phase two is आपकी कितनी robust आपने अपनी concepts की application पे काम किया. अब आप रीडिंग तो कंटिन्यूसली, वोकैब बिल्डिंग कंटिन्यूसली, ग्रामर की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो कंटिन्यूसली चलना ही चाहिए इन द सेकेंड फेज ऑफ द प्रिपरेशन. बट अब हमें लगाने चाहिए यहाँ पर प्रॉबेबली टॉपिक टेस्ट, मे बी सेक्शनल टेस्ट, और यू शुड वर्क ऑन मॉक्स. नाउ फेज वन में भी मॉक लिखो. सो इफ यू नो दैट यू प्लानिंग टू राइट द क्यूली पेपर, आपको मॉक एटलीस्ट वंस अ वीक तो लिखना ही चाहिए. बट व्हेन इट कम्स टू फेज टू, ट्राई एंड राइट एटलीस्ट 2 mocks a week. एटलीस्ट इतनी प्रिपरेशन तो बनती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट the sources that you can use. So if at all you are an LE student, if at all you are an LE student, you can use the RSMs that you already have. So उसमें जो grammar based books थी, they can be a very good source. उसमें reading comprehension passages हैं, उसमें vocabulary है, उसमें parajumbles हैं. So everything that you need to practice, everything is available. These are available online also. And other than that, if you really feel like practicing, there can be some very good books that you can refer to. So for grammar, you can refer to Wren and Martin. So they give you rules, they give you solved examples, they give you practice exercises. Word Power Made Easy, I guess, is the Bible of all the students who plan to write any entrance test these days. So it gives you very good words, it gives you very good meaning and explanation of the words. You can refer to those. For parajumbles and reading comprehension passages, anything that Arihant publication or Pearson publication offers will always offer you authentic content. तो आप वहाँ से भी practice कर सकते हो. Now, for the students who are, let's say, not exactly enrolled with LegalEdge, you can use the same sources to practice. Now, as we have already established, paper बहुत difficult नहीं है. थोड़ा सा amount of dedicated preparation, थोड़ा सा targeted आपकी अगर approach होगी, तो doing well in this
in the English section of this paper will not be difficult, and ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपका स्कोर को बूस्ट करने में आपको सीरियसली बहुत मदद करेगा. सो इमेजिन आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, आपने से 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस करने हैं, आपने इंग्लिश सेक्शन को कॉन्फिडेंटली फटाफट फटाफट अगर मार्क कर दिया तो आपको बाकी 5-4 सेक्शंस के लिए भी कितना सारा टाइम मिल जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर दिस सेक्शन वेल. थैंक यू.